जोकर तो मुंह पे बैठा है। अच्छा ये सेम हाइट पर। नीचे रखे रहिए। हाँ भाई ओ भाई कोई तो मुंह पे से उठा। हाँ जाओ फिलहाल ठीक है। कब से चल रहा मुझे है गेम ये? क्यों नहीं खोलने दे रही? 3 हुआ गोरे भाई? ये मुझे गेम नहीं खोलने दे रही। कौन स्ट्रीम? पता नहीं एरर आ रहा है, टुन 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 कर रहा है। बैकग्राउंड में देखो कुछ एक्स्ट्रा चालू बंद कर। नहीं बैकग्राउंड में गेम चल रही है बट उसको फोरग्राउंड में नहीं आने दे रहा है कुछ। हाय भैया एलएम पहुंचा क्या वापस? नहीं हो अरे यार पता नहीं क्या कर दिया इसने। यहाँ पता नहीं कुछ स्ट्रीम दिक्कत दे रही है। स्टीम का इशू आ रहा है, स्टीम लॉगिन कौन नहीं सा कर यूज रहा। करते तुम? स्टीम 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 का इशू है। हाँ वो बोल रहा है कि स्टीम वाज अनेबल टू सिंक योर फाइल्स टू जंप फोर्स विद स्टीम क्लाउड, तो हाँ वो इसीलिए मेरे को भी इसीलिए आया बंद हो था। गया। सुनो सुनो गेम अल्ट कंट्रोल ये टास्क मैनेजर ओपन करो। हाँ जी टास्क मैनेजर ओपन करके उधर बैकग्राउंड में चालू रहेगा देखो तुम्हारा जंप फोर्स, ओके। उसको बंद करो फिर एंड टास्क करो राइट क्लिक कर फिर ट्राई करो। या स्टीम की भी कोई फाइल रहेगी चालू उसको भी एंड टास्क करो और फिर इसे कनेक्ट करो। क्या नाम है क्या है? पोपा। इसका बोपा प्रोफाइल देखेंगे। प्रोफाइल देखते हो? रशियन स्टॉक कर फेडरेशन सकते हो? स्टॉक करके डायरेक्ट रिक्वेस्ट। हाय हाय देख रहे हो दीदी क्या चल रहा है? और कौन है? और कौन है भाई साहब और ढूंढ रहे हैं? राइन। ये लड़की का नाम नहीं लग रहा। तो ऐसे तो एंजल प्रिया भी किसको लगता था लड़के का नाम है। और रशे भैया तो फंस डेब्यू जाते थे सिटी ना। फिलीपींस का बंदा है। लड़के को नहीं बोलते। फिलिपिनो। लड़के सॉरी सॉरी। श्रुति किधर गई? श्रुति दीदी फिलिपिनो वाले बंदे हैं। से योरू डेविल में क्राई। मेक राय डेविल जेरी। क्राई क्राई माय क्राई। जेरी को भेजिए। जेली जेरी जेरी मेरे को जेली सुनाई दिया। टीम पे है ही नहीं बोलता है। स्टीम ही नहीं बड़े चल रहा। क्या बात कर रहे सारा कुछ हो? सेंड कर स्टार्ट ही कर दिया दो कुछ। स्टीम का। अब चल रहा चला चला चला। होता है। मेरा तो फोर्स क्लोज रहता है, मैं स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करता हूँ ये क्योंकि दिक्कत देता रहता है स्टीम बैकग्राउंड में चल के दिस भी। प्रोफाइल क्या होगा कुछ? क्या एरर हो सकता है? अभी एक चला ही रहते हैं। अभी चला। मतलब लोड हो गया तो चलेगा शायद से।
ये कौन सा गेम है ब्रो? ये है जंप फोर्स फाइटिंग गेम। इसमें सारे एनिमी कैरेक्टर है, नारुतो, ड्रैगन बॉल, मेनी मोर। पूरी गॉड दिख गए, पूरी गॉड रुक जाओ भगवान के लिए। पूरी गॉड बोलते तू उसके वाले में जा। पूरी बार ऐसे चल के दिखाओ, देखो। हाँ पूरी भाई, उनका डिस्कनेक्ट हो गया शायद। ब्रो तुम GTA 5 खेलो, खेलेंगे। GTA 5 यार क्या 10 साल बाद खेल। अभी वही है ना, बहुत लोग खेलते हैं। हमने भी हाँ बहुत। मैं भी कभी कभी खेलता हूँ बट उतना मज़ा नहीं आता। कुछ नहीं है उसमें करने को, वही है उसमें वही हाइस्ट है 5, वही आती रहती है बार बार, वही करते रहो। वो अगर ये खेलेंगे ना RP तो अच्छा है। RP मेरे को जमती नहीं, मैंने ट्राई किया था RP थोड़ा टाइम और 2 घंटे में बैन खा के आ गया। उन्होंने बैन दे दिया। नॉर्मल सैन एंड्रियास जैसे खेल रही थी उसमें। अरे नहीं, मेरे को नहीं पता था कि ऐसे खेलते हैं। और देखो भाई, ट्राई करते हैं यार। तो नॉइज गेट इसीलिए यूज करता हूँ मैं। अच्छा उसका आइकन नहीं आता है ना, नहीं इसीलिए। पी पे है ना मेरा, हाँ पी पे। ये मैं भूल जाता हूँ, पता है हर बार भूल जाता हूँ आवाज करना। अकरे このディオが手を貸す。そこだ。ザワールド。止まれ。時よ。ロードローラー。ダム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 。止まった時の中は一人。このディオだけだ。This mobile totally. 任せてくれ。僕が必要だ。 और सिद्धू ब्रो की गल है। こんなもの今だ。そろそろ。行け。黄金の矢よ。これが最後の一種だ。カードゲーム。अल्टीमेट है क्या? हाँ अल्टीमेट। ペガサス。流星剣。ここからミス。バンジー。तुम वहाँ पे हो यार। डॉज करता है अच्छा खासा ही। ペガサス水星剣。今だ。素晴らしい。ちょっと荒っぽく。これでどうだ。回転にご注意ください。やるな。助けに来たよ。デトロイトスマッシュゴー。逃がすか。やるな。ペガサス流星剣。逃がすか。こっちのスマッシュ。逃がすか。これでとどめだ。
食らえやるな食らえデストロイトスマッシュ食らえあやるなこのディオが手をデトロイトスマッシュ貸してやろう पर एनिमे का करो तो फिर मेरा तो दिखता ही नहीं है डायरेक्ट पट्टा पड़ता है 見切った次の舞 पहली बार काउंटर हुआ है このディオが手を貸してやろう三の舞ダム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 哀れなやつ俺の出番だなペガサスよ流星剣काउंटर नहीं 見せてバンジーこんなものいらねさして行け黄金の矢よこれが最後の一種だおっと ब्लॉक किया था 見せてバンジーだそこペガサス流星剣 इसका उसके जैसा है गॉन के जैसा जाएगा इसका ちょっと荒っぽく回転にご注意くださいもう大丈夫見せてバンジーくそいざ勝負だこれでとどめだ वाह 私が変わろう食らえデトロイトスマッシュ次の舞デラウェアハクレンデラウェアスマッシュシラフネいいだろうやった僕たちの勝ちだ खेलना क्या इन्हीं कैरेक्टर के साथ खेलना ना कैरेक्टर चेंज मुझे तो वार्म अप था यार आई अभी वाला मैच जीत के बता ओके इतना पता है कि एक्चुअल में अगर कंट्रोलर होता ना तो मैं नहीं जीतने देता हूँ बट मज़ा आता है यार टेक्कन हम ऐसे ही खेलते थे ना हम साथ में जाके बैठ जाते थे तो उसमें ऐसा होता था कि एक की पीसी में कनेक्ट हो जाते ना कंट्रोलर हम दोनों जन तो बार ये सब तो तू खेल दो पहले दो हम खेलेंगे फिर तुम दोनों मैच करना फिर हम दोनों खेलेंगे दो करके खेलते थे हम भाई और ड्रैगन बॉल बूढ़ो का शेन का होता ना बड़ा मजा आता था तुमने खेला ड्रैगन बॉल का वो शिन बूढ़ो का 1 2 3 नहीं एक खेला है मैंने पता नहीं कौन सा था मिला क्या मैच होगी ना लेजी थे मैच क्या बारिश है कितना लेजी रे मैच क्या बोल रही लेजी थे मैच बहुत ज्यादा देखो ना कितना बारिश है ना उधर भी है ना फिर रुका है बहुत ज्यादा नेक्स्ट तो गिले मारने जाना था ओए मुदा लेट्स गो इस बार पिस्टल किस चूज करके देखते हैं वहाँ पे स्नोफॉल है या रेन है रेन ही है स्नो हो रही थी शाम में कल मतलब वैसी नहीं रेन जैसी ये डीएलसी पास नहीं हुआ मेरा मैं ले रहा था डीएलसी शो तो बोल रहा है हुआ नहीं पता नहीं क्या हो गया बिना डायलॉग का कैरेक्टर गूंगा है बेचारा どいていろ俺が裁く गोकू के ऐसा है ब्रो गोकू के मूव्स कम है मतलब ये गेम एक्चुअल में वैसा नहीं है ना
サーフィング暗いなぶっ飛びなぶっ飛びな暗いな当たるとやばいからइनका ये जो दो स्टार वाले कैरेक्टर हैं ये मुदा मुदा बोलता है, वो दामू दामू बोलता है। भाई ये सही था, इसके अटैक्स देखने में मजा आएगा। नहीं वैसा नहीं है। हाफ हीट हाफ कोल्ड होता है ये। वो बेचारी किस दे रही थी। कोई किसी ने देखने को तो ये रोना चालू कर रहा है, चलेगा पापा हार जाएगा उसको तो नाना जोन में करते Sniper hello bro, welcome. ओवर लॉन्ग रेंज ये बेसिक अटैक है, ये वो नहीं यूज करता। मिली ओनली सही रहते हो। क्या करना चाहते हो? देखो पीसी अगर तुम्हें लेना है ना, देखो किसी का नाम मैं ले नहीं सकता ब्रो, बट सीन कैसा है ना कि बेटर है कि तुम खुद जाओ 10 दुकान घूमो, वहाँ पे तुम्हें जो जेन्युइन लगता है उससे परचेस कर दो।
रिबस करना है नहीं एंड हो कुछ गया भी हाँ कुछ भी रेट लगाते हैं लोग, कुछ भी मतलब ब्रांड है तो फिर वो कुछ भी रेट लगाते हैं। पीसी एंड बिल्ड फेक तो कमेंट सर भी है, मतलब तुम अगर एक पार्ट लेने जाओगे ना कोई तो तुम्हें अलग प्राइस बताएंगे, पीसी लेने जाएंगे तो अलग प्राइस बताएंगे। हाँ एक वो एग्जांपल बताता हूँ। मैंने वहाँ से फ्रेंड का पीसी बिल्ड कर रहा था, मेरा तो मैंने किया था वहाँ से एंड आई रिग्रेट कि मैंने वहाँ से किया, तो फ्रेंड को वहाँ से करना था। मैं बोला चल भाई करवाते हैं, तो उसको लेके गया वहाँ पे एंड देन तो हम लोग ने वहाँ से बना के लाए बजट। तो उसने जो रैम लिखा था वो लिखा था 5000 में 2, ठीक है। जो XPG की 8GB रैम है, मैं वही प्रेफर करता हूँ, 8 के 2 स्टिक 5700 में 2। तो हम लोग नीचे आए, नीचे वाले एक शॉप है वहाँ पे, यार वो भी अच्छी शॉप है, वहाँ पे बनाया पूरा बजट। वहाँ पे मेरे को ज़्यादा जेन्युइन लगा नीचे वाले शॉप्स पे। एंड देन देखा कि ये 7000 के नीचे 7500 के नीचे उतर ही नहीं है। और इनका कैसा है ना, तुम जो भी प्रोडक्ट लोगे ना, ये लोग एक जगह फ़ोन लगाएंगे, हाँ जी ये है वो है, तो इनका सबका डीलर एक ही है ऑलमोस्ट। सो उन्होंने बताया, तो मैं बोला 5000 बोल रहा है ऊपर वाला, बोलते हो ही नहीं सकता, मार्केट में इतना कम में है ही। उसने कॉल घुमाया, बोला तू स्पीकर पे रखा था प्राइम में भी, ये पहले उतने में देना, बोलते हो ही नहीं सकता। तो बोला, मेरे को बोला जब पूछ के आओ वापस से। तो हम लोग गए, तो बोले हम लोग को सिर्फ रैम दे दो, 2 रैम दे दो, 5700 को बोला नहीं, अरे वो 5000 नहीं, वो 8000 का है, वो मैंने दूसरा आपको गलती से दूसरा लिख के दिया, ऐसा सब चीज़। मतलब वो जो मेन पार्ट है ना, जहाँ पे जो पार्ट तुम लोगे, ग्राफिक कार्ड हो गया या कोई और चीज़, उसका प्राइस एकदम कम दिखाएंगे ताकि तुम वहाँ से लो, बट वही कॉस्टिंग वो बाकी सब प्रोडक्ट में बढ़ा देंगे। प्लस उनका सर्विस चार्ज अलग से, इंस्टॉलेशन 1500 रुपये एक्स्ट्रा अलग से, उसमें जो 2 घंटे लगाते वो नीचे तुम्हें आधे घंटे में 15 मिनट। वो भी अच्छा वाला क्रैक्ड वाला ऑब्वियसली, बट अपग्रेड नहीं करना पड़ा ऊपर, तो मेरे को वो भी नहीं दिया। सो बेटर है। एंड मेरे पर्सनल सीन्स थे बट वो मैं नहीं चाहता।力を貸してやる。僕が引き受けます。物足りぬは隙だらけじゃ。ハメハメ。こっちじゃ。隙だらけじゃ。よっと。そら。はい。隙だらけじゃ。無駄だ。無駄無駄。うわ。無駄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 。逃がさない。生まれろ新しい命をもらった。どうしたそこだ。破壊しろ。空に元気をあげてくれ。よしできたぞ。ありゃ始末する。मुझे लग रहा है मैं पहली या तीसरी बार गोटू यूज कर रहा हूँ। 待て油断した。生まれろ。ママは消えろ。勝とう。遊園放火の術。逃がしはせん。その力の差を思い知る。勝てはせん。まだゴールドエクスペリエンスレクイエム。やせん。無駄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 。どうした。食らえ。भाई आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। कम गेम की ना बहुत ज़्यादा आवाज़ है, मैंने कम कर दिया फिर भी बहुत लाउड है। なるほど。内浜田らも全力で答えよう。すべてが無駄になるということ。この完成は一可能でな。俺一人分なら地図を書き直す範囲が狭くて済みそう。अभी तो इसकी एक्चुअल एबिलिटीज नहीं है इस गेम में। वो नारुतो में ये पहली बार यूज कर रहा हूँ।
甘い滅びを与える。怖いのか。邪魔だ。しゃ。滅びを与える。怖いのか。これでとどめだ。怖いのか。滅びを与える。मार रहा है 待たせたの。我が憤怒を受け。だらけじゃ。滅びを与える。こっちじゃ。とっておきじゃ。 किधर मार रहा था ये गोकू आया लट What do you suggest Amazon or Lamented? No. See, Amazon में कैसा है ना ब्रो, सब पार्ट तुम्हें एक दिन में नहीं आएंगे. ठीक है, मतलब सब पार्ट एक दिन में नहीं आएंगे. बिल में तुमको इशू और बहुत सारे टाइम पे ना, अब मैं इन डिटेल नहीं बता सकता, बट या Lamented इज बेटर. बस देख के जाना जो पार्ट लेना है. और रिस्टार्ट करते क्या यही मैच? नहीं, मैंने एग्जिट कर दिया. अच्छा, कि जो पार्ट तुम्हें लेना है ना, वो डिसाइड एक महीना अच्छे से रिसर्च करके डिसाइड करके वही पार्ट लेने का. वो तुमको यहाँ वहाँ घुमाएंगे, ये ले लो, ये अच्छा है, वो ले लो, वो अच्छा है करके. तुम्हें अपने ओनली उनका जो कम्युनिकेशन स्किल रहता है ना, बहुत ओपी रहता है. तुम्हें यूँ मैनिपुलेट कर देती है. सो तुम्हें ज़रा सोच के जाना पड़ेगा क्या चीज़ लेने जानी है. मॉनिटर अगर ये लेना है तो वही लेना है, ये सोच के जाओ. हाँ, अगर उससे अच्छा कोई डील मिल रहा है देखो भाई, गेंशिन करो क्या अभी क्वेस्ट का मैंने बीच में छोड़ दी थी, वो डिलीट करके जा रहे हो तो वो भी एक देख लेना किधर गई. मैंने जो लिया था वो तो अभी तो सही चल रहा है, कोई इशू नहीं. बट मेरे ख्याल से जनवरी के बाद ग्राफिक कार्ड के प्राइस डाउन. अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के क्या प्राइस है? ग्राफिक कार्ड अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक. सब जगह वही, उधर भी वही स्कैम चालू. स्टॉक में आते नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है सब चीज़ें ऑलमोस्ट. अच्छा, मैं ये मैच के बाद जा रहा हूँ क्वेस्ट करनी है गेंशिन के. ओके Akash bhai, I'll recommend you that you should play, you should buy laptop nowadays more than the PC. You can attach monitor later on, because कैसा है ना, लैपटॉप बहुत अच्छे कॉन्फ़िगर के तुम्हें मिल रहे हैं सस्ते. 1 लाख में तुम लैपटॉप लेने जाओगे बहुत अच्छा मिलेगा. 17 का मिलने जाओगे बहुत अच्छा मिलेगा. 16,000 का MSI का एक आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है. 2-3 अच्छे दुकान के नाम देखो. कंप्यूटर लैपटॉप मैक्स ठीक है. लैपटॉप के लिए जाओ, बाकी में किसी के नाम मैं कुछ बोलूंगा नहीं. अच्छे दुकान पे इफ पॉसिबल ना तो सेल आती होती है ना, जो हाँ Amazon की या उसकी जो भी होती है, तभी ट्राई. तो वो उस पे बहुत मिलता है. मैंने उसी से लिया था लास्ट टाइम 18 में ना, सेल आई थी, तो मेरा ऑलमोस्ट 50% में मिला था मुझे लैपटॉप. ये सेटअप, ये कौन सा अटैक है तुम्हारा? एक्स वाला है या ये नॉर्मल है? ये तो कौन सा? इसके भी वैसे ही है ना, कॉम्बो वाले. अल्ट्रा स्टिंक नहीं है इसमें, अल्ट्रा नहीं है. अच्छा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं. हाँ मैं इंस्टिंक्ट
当たるとやばいぞ。 कैसे आया 下がって देख わしが出よう。はっ。気がしぐる。 यार これで受けよ。どこを見ておる。手置きじゃ。逃げ場はない。 ये क्या कर रही है 雷神戦記。 ऐसे आई होगी तुम्हारे स्क्रीन पे पता नहीं भाई क्या है रही है ये ऐसे ऐसे स्लो मोशन में आ रही है मैं भी वही देख しぐる 臆した。残念だが終幕だ。拾ってもらうぞ。こいつの中でおとなしくしてやろう。 शुकाकू 発動体操封印。 इसका नाम क्या है इसके पेट का शुकाकू その程度で間合いを頃合いじゃない。 ये ब्रो どこ अरे मैं नहीं बात कर रहा भाई क्या बोल रहा 逃げ場はな臆しい。た。 एब्सोल्यूट डिफेंस 脆いな。まだま नहीं だ。 वो जो है ना しぐる यही है そ काम の आता 手 है か行くぞ。 भाई इनको भगाओ यार とっておきじゃ。ドロイドスマッシュ。俺手が上や。 क्या कर どこを見ておる。わらわこっちじゃ。つぶれろ。友殺しの骸骨。やるな。逃がすか。へよ。 तुम्हारे लगे है ना मिली में तुम्हारी फटके थे पहले पावर डाल 友殺しの骸骨。 डैश क्यों कर रहा है ये अच्छा मैं गलत बटन दबा रहा हूँ गलत बटन दबा रहा हूँ मैं इसीलिए 食らえ。ドロイドスマッシュ。行けよ。よっ。まだまだ。ありゃ。やるな。虎に元気をあげてくれ。よし、できたぞ。 कितने मुंह पे ना तुम लोग 食らえ。 अटैक में था वो क्या चिल्ला रहे रे बेचारे बहुत बुरा लगा 無駄だ。捉えた。 क्या मुंडी कर भी ना है 食らえ。ドロイドスマッシュ。 अरे ये अटैक ब्लॉक कराओ यार そこだな。おりゃー。そこだな。食らえ。ドロイドスマッシュ。逃がすか。 भाई क्या है ये 逃がすか。逃がすか。 वाई कौन सा बटन よし時が止まるってどんな मैंने टारगेट फाइनल नहीं यार こいつを食らいな時間を止められるのはあいつだけじゃないんですおお食らいな虎に元気をあげてくれ。よし、できたぞ。ガバッチめ。ハメハメ。भाई ये कहाँ से आया अब भाई तुम जादू करो भाई मैं नहीं है やった。僕たちの勝ちだ。 एब्सोल्यूट डिफेंस ब्रो उसका डिफेंस अभी मैं डिफेंस बटन यूज नहीं करता था पहले हाँ इसलिए हारते थे हाँ इसीलिए आता था अच्छा मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू करोगे यस ओके मैं दिखता हूँ ना है ना हाँ सी ऑफ थीव्स के लिए आएगा 10 कह रहा हूँ 10 बजे यस ओके चलो चलो ओके गाइस जोकर ओके चिराग ओके बाय भाई डरा दिया मैं कॉल करके मेरी मार्वल आ का जाया प्रॉब्लम मैं। के लिए अच्छा हुआ भाई गुरी भाई गए कारण हमको रजगढ़ भाई मिल गए मार्वल में गुरी भाई लेके जाते दोपहर में पोस्ट किया है डायमंड 3 पहुंचा हूं होगा सही मैं भी आ रहा हूँ यार। डायमंड पे रुक जाओ धीरे धीरे अच्छा समझ गया उल्टा पुश हो रहा है नीचे उधर से हाँ
लेजेंडरी से इनमें हीरो पहुंच गया। भाई मैंने 5 छोड़ स्टार दिया, और न्यू कुछ। स्टेट में कर रहा था मैं रैंक पुश। मैं प्लेटिनम में बैठा हुआ अभी भी, हो जाएगा। लास्ट मैच वाले में 2 mm था, जंगल कैप कर रहा था टॉप से, और फिर 2 mm ले लिया और एक सपोर्ट, अरे तो भी उस वो मैच जीत गया। पोकेमोन यूनाइट दो कैसा सपोर्ट है? किसका था? क्या बोल रहे हो गोरी भाई? पोकेमोन यूनाइट अच्छा है बट उसका ना एक सीन मेरे को जो लग रहा है ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा वो गेम। वो बिकॉज दो पत, रीजन, एक तो ये, हाँ और जी। एक तो मतलब इतना क्रेज नहीं बनेगा उसका, और दूसरी बात वो ना टेंशन दिख रहा है मेरे को। वो टेंसेंट आता है उसमें, अगर हाँ टेंसेंट डाउन स्टार्ट होते किया होते टेंशन गेम्स, फिर अभी जब तक किसी को पता नहीं है तब तक चलने वाला सीन लग रहा है मेरे को। तो वही है कि टेंसेंट तो नहीं उनका टेंशन चला रहा है, हमारा नेटिव्स नहीं चला रहा है। यार चलना चाहिए, गलत बात है इनकी ऐसे ना। तो गेम्स की क्या गलती पता यार बेचारे। गेंशिन के भी चांस है बैन होने के। गेंशिन टोटली उनका चाइनीज ने डेवलप किया है ये। ये चाइनीज ने डेवलप किया है गेम और चल रहा है। इंडिया के देख रहे हो ना कैसे डेवलप करते हैं, वो आया था बीच में गेम। कौन सा? फौजी। पता नहीं ब्रो भाई, मेरे को नहीं पता, र्यूमर्स आ रहे थे। जैसे बीजीएमआई बैन करवाया पता है, और फौजी निकाला कि हमारा बीजीएमआई के टक्कर का गेम है फौजी, घंटे जैसे आया ना भाई। नहीं एक्चुअल में बढ़ाने को तो बनाते, बट बनाते बजट नहीं होता है, देती नहीं है बजट, बहुत चाहिए उसके लिए। रैंक खेल रहा है कोई तुम में से? चलो ब्रो भाई करो शाम माइक को बंद करो। मिलते। अरे क्या बहुत आवाज है पीछे, माइक बंद करो। अरे शाम को दूर मिलते से आ रहा है, तो भी आ रहा है क्या? बहुत जोर से आ रहा है। ओके बड़े महल में रहते हो क्या लोग चिल्ला चिल्ला के बात? ओके ब्रो, बाय बाय पूरी भाई। हेलो बूम। Food's ready, everyone! Come on, let's eat! I made a few dishes based on some popular Mondstadt recipes. This is no good hunter, but there should be enough to go around. Please, help yourselves. Wow, smells great. Don't mind if I do. Wait, don't steal all the fried vegetables. Leave some for me. Hey! Paimon's full. Albedo, you're too modest. These dishes are as good as anything you'd find in a top restaurant. Are all alchemists so good at cooking? You may be onto something there. Right? Paimon thinks so too. It's his lab manner that gives it away. The kind of guy who holds a potion bottle as steady as a rock isn't the kind of guy who's gonna be slapdash with his salt and pepper. Actually, that makes a lot of sense. अच्छा स्टोरी क्वेस्ट रुकी हुई है, स्टक हो गई क्या? I'm so sleepy after all that food. Did Bennett fall asleep sitting up? He must be totally wiped out. The way he's sleeping is so alert. I'm impressed. He seems to be in a deep sleep. Ooh, Paimon wonders if he sleep talks. Oh, no, Dad, no apples for me. I want sticky honey roast and fisherman's toast. Sticky honey roast? That's your favorite, isn't it, Amber? Sure is. Give me a sticky honey roast from Good Hunter any day. I used to take Eula to Good Hunter a lot back when we first met. Before long, Sarah would start cooking our usual orders as soon as she saw us coming. She said we ordered the same thing so often that it was practically muscle memory by that point.
She also said that if everyone in Mondstadt ordered like we do, her job would be so much easier. All she'd have to do is memorize everyone's favorites. Always eating together. Aww, it's nice that the Traveler and Paimon always eat together too. It's a sure sign of true friendship. Two people simply sharing a meal says nothing either way about the relationship between them. That depends if it's a one-off meal or a regular occurrence. Aha! Paimon just noticed something. Whenever Eula doesn't want to admit to something, she raises her chin or puts her hands on her hips. Ah, you've all picked up on that. Didn't know Eula's tells were so easy to spot. We are done here, yes? I am free to go, am I not? Then please excuse me. I have a frozen lake I need to be at. You're going for an ice bath at this time of night? Wait up! Don't go without me! I thought you wanted to get some sleep. So maybe you should stay here and rest. No, I should come with you. It's late, and it's dark, and you're not good with directions like I am. Come on, let's go together. An ice bath? Whew. Rather them than Paimon. So much. Oh, hey, Dad. Wow. Bennett really? Okay, looks like... Alright, you two. Time to paint. Have you decided what to paint? Like you even need to ask. It's obviously going to be Paimon. Sure. But we should move elsewhere. We're likely to disturb Bennett's sleep if we stay here, so let's go outside. Okie dokie. Alright, grab your easel, paper, brushes, and paints. Don't leave anything behind. Huh? Phew. Let's paint here. Allow Paimon to adopt an elegant pose for your artistic reference. Hey! What's that look for? Cut the attitude and... Confidence is a good thing. Those to whom it is endowed do well to flaunt it. I'm looking forward to the finished piece. Alright, let's start with the head. Now, in your mind's eye, what is written on Paimon's face? Huh? Is that how Paimon really looks to you? Okay, forget it. We can come back to that. Let's move on to the body. Come on, paint what you see when you look. Paimon's starting to feel like this is not going to turn out so great. Nope, let me see. Let Paimon see. What is that? Why you... How could... Paimon is lost for words. The brushwork is smooth and the composition seems professional quality. You had no problems there. So what the heck happened with the face, huh? Explain that stupid expression! Explain it! Smooth, professional quality? And those eyes! Those boring, lifeless eyes! Where's the soul? Traveler? Have you previously received... What? You pour your heart up... Fascinating, Paimon. If this is not to your liking... Paimon, is this better? It's a total ground-up overhaul, that's what it is! It's so pretty! Is that really what Paimon looks like? Adding flourish to the finished piece is an essential component of what makes art...
Art. This is not to say that you differ from the painting on a fundamental level, rather that the real you and the you in the painting present two different styles of beauty. You remain the core reference point for the painting. So, Paimon, you can put your misgivings aside and hang this painting wherever you like. Wow! Thanks, Albedo. Oh, I merely added a flourish here and there. You should be thanking the Traveler. In truth, ground up overhaul is more or less an accurate description. The more Paimon looks at it, the more she likes it. Great! Paimon has a portrait painting. Paimon's gonna show this off to everyone. It's nothing. I can paint you next time, if you'd like. You can hang it in your home as a souvenir. I rarely entertain so many guests at my camp. It's lively. A little noisy, even. But I don't dislike it. Liveliness is a rare thing here on Dragonspine. Ah, it's a new day! Let's go meet up with everyone. The truth of this world. What could it be? Hey, good morning! I slept great last night. How about you guys? All rested up? I'm fine, as usual. The path down the mountain is easier to follow in the daylight. Let's take this chance to head down to... Let's go! If we make good time, maybe we can all get lunch together. I flipped another insignia just outside the camp. Wrong again. So your bad luck is all used up. We'll be down the mountain in no time. Yeah, my thoughts exactly. Today's the day. Huh? Oh no! Avalanche! Trap,
Traveler, Paimon, are you alright? Are you hurt? Paimon's fine. Oh, that's good. My arm got a little scratched up, but it's nothing serious. I'm okay, but I don't see the other two. I'm afraid the avalanche may have pushed them off the cliff. They fell down? They'll be okay though, right? I think they're both robust enough to survive the fall. But if the falling debris knocked them unconscious, and they're lying there in the freezing cold, we have to get down there and rescue them, immediately. Compressor limiter Okay, off. let's move. Yeah. Hang in there, guys. Head beneath cliff to look for companions. Bennett is sus. Bennett, are you okay? Shout if you can hear me! Bennett! A voice! Over there! Bennett, is that you? Guys, I'm over here. Are you alright? Are you hurt? Let me check. I'm a little dizzy, but I'm not in any pain. I don't think I'm injured. Thank goodness. Scared the life out of me. If you're dizzy, sit and rest for a while. It's fine, really. This kind of thing happens all the time. I'll be fine. Thank you. Wait, where's Albedo? Isn't he with you guys? We thought he fell off the cliff with you. He still hasn't shown up? We found Bennett here, so Albedo can't be far away. Keep searching this area. Got it. No response. Are we definitely looking in the right place? He's not here either. Well, let's check with the others. Well, any sign of him? Not a trace. Nothing from me either. Strange. We didn't have any luck either. Where could he have gone? Everyone! Albedo! Are you okay? Nothing serious. Okay, everyone accounted for. Guys, I think it's gotta be because of me. The avalanche only happened because I'm here. I guess flipping a treasure hoarder insignia isn't gonna change my luck after all. No wonder no one wants to go adventuring with me. I'm so sorry. Don't say that. I'm hardly the lucky type myself, so I'm not about to go blaming every little thing that goes wrong on you. Exactly. Besides, Dragonspine is a dangerous place. Avalanches literally come with the territory. Bad luck has nothing to do with it, okay? Traveler, what's wrong? Your face looks... Oh no, did you get hit on the head? Yeah, Paimon. Yeah, Here. absolutely. Everyone, the incident is behind us now. We should keep moving. Why do I feel that Dragonspine has become more dangerous than it used to be? I hope it's just my imagination. Our top priority now is to get off the mountain and regroup with the adventurers. Whatever further dangers this mountain has to throw at us, we must face them together. Agreed. Guys, keep your eyes peeled and watch your step. Careful does it.
तेरे तेरे Whew, we've been heading in the right direction for a good length of time now. We must be getting close. I can feel it. Victory is in sight! Hooray! As soon as we get to base camp, Paimon wants a bowl of hot soup and some barbecued meat. I hope we can all get there safely. Hey, what's on your mind? You seem a little distracted. Something's up, isn't it? Are you hungry? I don't think I've spent so much time on Paimon Dragonspine wants to before. give a hug after It all. sure is cold, but the view is amazing. Isn't it, Eula? Eula? Sorry, I wasn't listening. What did you say? I was just thinking. Whenever I've met up with you at Dragonspine in the past, we always stick to the same few spots. It's much more vast and beautiful here than I realized. If it were a little warmer and a little safer, I bet this place would be bustling with visitors. I agree. People are put off by the cold and have an aversion to danger. Albedo, I'm gonna is this the way wish down? on the banner. Yes. I think there are several routes in this area. I'm kinda dizzy too. I keep Either path will work for us. Follow me. Let's try. I'm on 72, right? Wait. I can redeem 5 wishes. Then, yeah, Bennett 77. and Amber don't look well. Can we take a break? We can continue once their conditions have improved. That's the same spot जो last year आया Now था. that you mention it. Huh? Cryoregister. You hit your head earlier, didn't you? Oh, you noticed. Are you sure it's worth holding everyone up over a little thing like this? Guys, don't forget to like stream, or maybe you can share it to show some support. Yeah. Okay, sorry for this. Thank you. Yeah. Thank you. Hi, Albedo. Hey. Okay. 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 Okay.
about to get a heart attack. Two wishes, two. Okay. God, but fuck. Yeah. Nice. Nice. I'm gonna pull these two. No, I know for sure at least next character is guaranteed. Boy. Drinking some water can help with the dizziness. Oh, and lying flat on your back helps too. Thank you, Bennett. Seems like you really know your stuff. Well, when life gives you lemons. Bennett, weren't you feeling dizzy too? Stop pushing yourselves, both of you. Get some rest. We'll continue when you've gathered your energy. Eula might come off as a little frosty, but she takes caring for her friends super seriously, more than anyone else I know. Every time I see that look on her face, I'm just like, ah, stop staring at me. Traveler, I know what that look means. What's on maybe seasoned veterans, I sense it too. Something seems to have changed, but I can't confirm for sure. It could be difficult to verify. It might be imprudent to speculate out loud, but I believe you know what I am referring to. Traveler, you... Yes. Cutscene. Boy.
It's not over yet. Okay. Brace yourselves. This will be a challenge. Stay back! I'm going to cut this weed down to size! Come into being. Gather. There is no escape! Hey, how's my health decreasing so fast? Stabilize. Live! Shine down! Gather. Stabilize. Burst forth. Gather. There is no escape! Live! Solidify. Come into being. Inazuma shines eternal! This is order. Burst forth. Feel the ancient power. Higher, higher, pants on fire! What in the world was that thing? One moment it was human, the next it was a plant! Is everyone alright? We're fine. But can you please tell us what's going on? I take it this monster's whom I had the pleasure of meeting last time. Correct. As you might have guessed, this is a mutated whopper flower. An extremely rare kind. But can whopper flowers turn into humans? Not typically. But conditions on Dragonspine are far from typical. Perhaps the dragon's blood seeped into the land, then was passed to the monsters via the ley lines, accelerating their rate of mutation. How could that happen? This mountain is home to the remains of Durin, the venomous dragon. If there is anywhere in the world one might expect life to do unfathomable things, it would most likely be here. Durin was an artificially created life form. Its existence is nothing short of a miracle, and proof of countless possibilities. In other words, this mountain we stand on is a cradle of life's profoundest mysteries. A vast and terrifying hotbed of possibilities. The avalanche. It must have been the work of this imposter. Agreed. All the other troubles you faced on the way down could also have been its handiwork. My guess is that it was targeting everyone that I've had contact with.
not inconceivable. But what was its purpose? Was it just trying to get rid of us? I have a preliminary hypothesis on this. Whopper flowers are masters of mimicry, and those we encounter in the wild often appear in the vicinity of the plants they impersonate. In other words, the whopper flower likely has an instinct to replicate and replace. As a plant, it will disguise itself as another plant and infiltrate the group, hiding among them for cover. The plant being imitated has no way to detect or fight back against this behavior. But when it disguises itself as a human... It wanted to replace you and infiltrate our group? Yes. Maybe it created the avalanche to get rid of us. I predicted this eventuality, so I availed myself of the avalanche to hide and lure it out. It was watching us the whole time, and when it saw that I had disappeared, its instinct was to take my place. At that point, its disguise was complete, and its next move was to hunt its prey. Yes, that's exactly how whopper flowers operate. So when it approached and attacked Joel, what was that? A trial run? Perhaps. Or maybe it enjoyed posing as a human, and wanted to experience what it felt like to be human. We're fortunate to have discovered it in time. I think the Traveler was the first person other than Albedo to notice something was wrong. Traveler, how could you tell the real me and my imposter apart? I want to know too. I had no idea the other guy was an imposter. They looked exactly the same to me. I see. It goes to show how difficult it is to impersonate a human. This mutant whopper flower tried its best to replicate the original exactly, but still managed to miss some details. Unbelievable. To think that Dragonspine creates such Anyway, at least we won in the end. It looks like my method did work after all. I used up all the bad luck, and the good luck finally came through. About that. If you're referring to having fallen down the mountain and avoided injury, well, that's because I was secretly protecting you. Huh? Well, that still counts as good luck to me. Yes, that's not an unreasonable way of looking at it. Okay. We've been delayed long enough. Time to move on. Yeah, let's go! Cyrus doesn't seem to be here. He must have headed up the mountain. Let's wait for him here. Amber, are you feeling better? Yep, all good now. Nothing to worry about. I don't know what I'd do without you guys. If not for you, I'd probably still be locked up in that cage. I really want to thank you all properly, but I can't think how at the moment. Huh? You must be pretty used to being on the receiving end of people's kindness by now, though, surely. You probably need it often enough, given your... situation. Come on, don't put it like that. Sure, plenty of people have shown me kindness before, but that doesn't mean I will ever take it for granted. No matter how many times people help me out in life, I will never forget any of them. Well, instead of repaying those who helped you, perhaps you could help others yourself. Everyone meets others in need from time to time,
By choosing to be there for them, you're passing the kindness you received onto others. Yep, you're right. That's what I've always tried to do, and will always continue to do. Right. And when Cyrus gets back, I'll find some way to help him out too. This has been quite an eventful day. Yeah, it has. It's really hit me how tired I am now that I've started to relax. I need to rest. Everyone, please excuse me for a while. Yeah, I need to get some water and maybe a piece of fruit. Once I'm rested up, I need to get back to being an instructor again. Well, it looks like the curse of the mountaineer feels like an action-packed chapter has come to a close. Shall we find somewhere to rest and chat too? Why not? Then please, come with me. You sensed something too, didn't you? Then let's go. Huh? Are you going back to your camp again? Paimon thought maybe we could talk here. Okay. Might as well come with you. Good. Shall we set off right away? Sorry for bringing you back here once again. Some topics are best discussed in private. Is this about the imposter? That's right. I have to say, Traveler, I'm very surprised you noticed the difference between me and the imposter. Yes, this mark. Perhaps it's where it all began. Ooh, sounds like the beginning of a big story. Keep going. Well, I can't deny that what I'm about to say does sound like something from a children's storybook. So, what do you think this diamond-shaped mark means? A tattoo? A crest? Something else? No. Consider it a birthmark. Have you ever seen an intricate glass ornament and wondered how it was made? Well, one method for crafting with glass is a technique known as glass blowing. Glass blowing is not a widely known art in Teyvat. For this reason, glassware made in this way is usually very expensive. As the name implies, glass blowing involves blowing air into a hole, much like blowing up a balloon. This type of glassware is known for having a pontal mark at the point where the blowpipe was inserted, where the hole was sealed at the very end. This mark is a sign that the item was crafted by a human hand. Sounds kind of amazing. It is a wondrous and beautiful art form. Alice says that these marks are seen as proof of the maker's fine handiwork, the only flaw in an otherwise perfect work of art. My mark is something similar to this. The difference between synthetic and natural life lies in the directional flow of the life force. The energy of a natural life form flows out from within. That's why flower buds bloom and curled leaves unfold. And it's the very reason we watch and wonder at blossoming flowers. Creating life artificially, on the other hand, involves, to a certain extent, the introduction of an external source of energy into the embryonic life form. When the hole where the life force was infused is sealed at the end, it leaves a mark not dissimilar to the pontal mark in blown glasswares. The alchemical substance drips and spreads out in all directions, resulting in this rather Wow! So that's where it came from. This mark is a sign of my artificial origins, and proof of my imperfection as a human. I presume that the imposter intentionally avoided replicating this mark, so as not to become less than perfect himself. You are fundamentally different from other people. I have few qualms about sharing my secrets with you. Just as Paimon said, it all sounds like a story. Even if you were to tell anyone else, they would regard it as nothing more than a tall tale.
The transcendent and miraculous are not the only things to which human beings aspire. They pursue the everyday, the ordinary, to a far greater extent than I would have ever imagined. People like to believe that those who are thoroughly different from themselves could only ever exist in stories. It makes things much easier. Or, in other words, all of the unfathomable things we've seen recently would make good material for a novel. I have friends who write novels. If they wrote this story, it'd probably be even more complex. Making up stories is easy. Even Paimon can do that. Oh. I didn't know you had that kind of talent. Paimon's the best guide into that. Making up stories is a piece of cake. In that case, how about we have a storytelling contest? We can base our stories on the events of the last few days. Sounds great! But we still have to help out the Adventurers Guild. I understand. Creativity is something that cannot be rushed. Take your time, and come back when you have found some inspiration. We'll see whose story is more compelling. Deal! Okay, we'll regroup with the Adventurers Guild for now. Sure. My story. Yes, I should have known. Master's failed specimen in the dragon's belly. This is where the story truly begins. If we switched places, if you were the survivor, then as the abandoned experiment, the failure of the primordial human project, I'd want to replace you too. I would replicate your appearance, study your alchemy, and create miraculous life forms to divert your attention. I would wait for the right moment, then dispose of you and the Traveler, the sole person to have known your secret. And then, I could finally experience the joy of being brought into the world. Hey, yo, what the fuck? Trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight.